Hey everyone, welcome back to my channel June Flower. Well, today's video is not about any haul or something, but ये मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं, कुछ शीट्स हैं, कुछ पेपर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कौन से मुझे बहुत अच्छे लगे और कौन से so so. Okay, this is a very old one. Again, it's a watercolor one. और ये मैंने कुछ सोच के नहीं लिखा था ना लिया था. The only thing I saw कि made in US, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं हाउ इज़ इट. बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं मुझे पता था. द थिंग इज़ कि इसमें 12 शीट्स हैं, 5.5 इंचेस बाय 8.5 इंचेस का है. और इसको मैं ट्राई करना चाहती थी कि हाउ इज़ इट, बिकॉज देख के इसकी शीट और इसकी ये क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही थी एंड आई फाउंड इट वेरी डिफरेंट. वेल, डोंट लुक एट दिस इज़ वेरी फनी. बट ये वाली वीडियो आपने मेरी देखी थी जिसमें मैंने ये बनाया एंड आई एन्जॉयड डूइंग इट. सो it's fun to work on it. I really enjoy it. ये मुझे पड़ी थी 285 की. And basically I actually didn't know about this, लेकिन out of curiosity I tried this one. This is my first one जो मैंने Amazon से किया था, just like that, without knowing कि ये कैसा होगा. The thing is कि ये A5 शीट है साइज़ इसका, जो मुझे परफेक्ट लग रहा था बिकॉज आई डोंट बिलीव कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बनाऊँ. द थिंग इज़ कि छोटी छोटी सी बनाऊँ एंड आई एन्जॉय मेकिंग स्मॉल टाइनी पेंटिंग्स, स्पेशली इन वाटर कलर्स. तो आई जस्ट वांटेड टू ट्राई. तो कुछ मैंने बना के देखा है, नॉट बैड, काफ़ी अच्छा इसमें आया था. द कलर की कुछ प्रॉब्लम थी मेरी, जो उतने ब्राइट नहीं दिखाई दे रहे हैं. बस that's okay, fine, but the sheet and color is good. Thickness is, it's not very thick, but yeah, it's good to work on. This is again my favorite Santorini again, and these sheets are very nice. I enjoyed. Again, Santorini. This is my rough work, please don't look at. This is again, oh my god, dirty pictures. Yeah, this one is good. इसमें ये जिस तरह से जो वाटर कलर है वो जिस तरह से एब्जॉर्ब होता है, दैट इज़ वेरी नाइस. दैट इज़ द फन पार्ट आई थिंक व्हेन यू आर डूइंग वाटर कलर पेंटिंग. तो जब आप देखते हैं कि आप जो स्ट्रोक्स चला रहे हैं और उसके बाद जो वाटर कलर जिस तरह से एब्जॉर्ब होता है, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. वो बहुत सुंदर लगता है. सेंटोरिनी, दैट्स इट. एनीवेज, दिस इज़ पियानो. A5 is the size of these sheets. और ये मुझे पड़ी थी, सॉरी इसमें प्राइस टैग अभी नहीं है, बट आई थिंक ये 300 तक की रेंज की ही थी, नॉट मोर देन दैट. एंड इट वाज नाइस. इसमें बहुत ज़्यादा शीट्स नहीं थी, बट आई थिंक 15 शीट्स वर देयर. देन दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑर्डर्ड. ये अभी मैंने अमेज़ॉन से भी मंगाई थी कुछ टाइम पहले, वो मेरी ख़त्म हो गई. And this I bought from my nearby stationery shop. These are Brustro artist watercolor sheets, and these are 300 GSM, which is good. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब the sheet is 300 GSM, ज़्यादा अच्छे से absorb होता है and all. ये मुझे पड़ी है 198. 198 में these are 18 sheets, and Brustro is nice. I think I love this company. इसकी sheets, इसके जो brushes हैं, इसके colors, everything they are good. Then I picked this also from there. These are acrylic papers, artist acrylic papers. This is 400 GSM. ये मुझे पड़ा 399. तो इसमें है 18 plus 6 sheets. ये अगर आपको लगता है कि आपकी स्टेशनरी शॉप या नियर बाय स्टेशनरी शॉप पे अवेलेबल नहीं है, आपकी सिटी, आपके टाउन में अवेलेबल नहीं है या नहीं मिल रहा है, एंड यू आर रियली यू डोंट नो हाउ टू गेट इट,
then I'll try to give you the link in the description box because ये आपको easily Amazon पे मिल जाएंगे. And then again मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही. The only thing is I love this brand Brustro और इसकी मुझे शीट्स और इस पर मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है. ये मेरा पुराना वर्क है which I don't know whether ये इस पे एक अलग ही यू कैन सी जब ब्रश आप लगाते हैं तो उसका एक जो कलर जो इम्पैक्ट आता है जो उसका आउटकम आता है दैट इज़ अमेजिंग. दिस यू सीन दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स. See, so this is my artwork which I think I'll show you some other day. ये वो लूज शीट्स हैं विच आई वाज टेलिंग यू कि मैंने ये ब्रिस्ट्रो का अमेज़ॉन से लास्ट टाइम ऑर्डर किया था. वही सेम शीट्स मेरे को स्टेशनरी पे मिली तो आई बॉट. आई एम टॉकिंग अबाउट दीज वंस. दिस आर्टिस्ट वाटर कलर ब्रिस्ट्रो शीट्स. This is what I used earlier and I loved it. I just loved it. इसका बहुत अच्छा आता है impact. These are different ones. This you saw. This paper was not good. Outcome बहुत अच्छा आया है, no doubt. But I didn't like the sheet at all. These are some incomplete ones. This is again a sheet which I didn't like. I just bought from somewhere. So iska you can see the quality. The quality is not that good. Color आप कर रहे हो, everything you are doing, but वो impact नहीं आता है, वो outcome नहीं आता है, वो color, वो एक shine which you expect or which you feel. See, doesn't look good. This is it. These again ये लूज शीट्स ही थी जो मैंने अभी आपको दिखाई थी ब्रिस्ट्रो की. दिस इज़ माई पेट. आई हैव अ बॉक्सर पपी लियो. ये मैंने उसकी वाटर कलर पेंटिंग बनाई है. दिस शीट इज़ दैट वो लोकल शीट विच आई थिंक आई जस्ट टुक इट. आई वांटेड टू experiment on. And these are basically acrylic sheets, but I wanted to do watercolor. So I was just trying. इस पे भी not bad because if you see जो sheets हैं the roughness it's very nice. और इस पे करके again you enjoy coloring on these. So this is it.